अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सनवे लगून। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे साथ है शान जलाल और ये हैं अरसलान जलाल। मेरा नाम है उमर इकबाल, आप सब तो जानते ही होंगे। ये भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये जलाल अपने दादा अबू का नाम लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट आज का व्लॉग। तो वेलकम बैक। टिकट्स हमारे हाथ में, मैंने टिकट परचेज़ कर ली है। अभी बहुत ही खाली है, देख सकते हैं बहुत कम लोग आए हैं और यही मैं चाह रहा था रश थोड़ा सा कम हो, क्योंकि आज फैमिली डे नहीं है। तो फैमिली के साथ आया हूँ मैं। ये है पीछे अरसलान और ये है मेरे पीछे क्यूट क्यूट से बेबीज़। हेलो हाय। तो अभी देखते हैं, चिल करते हैं अंदर जाके और क्या माहौल है। तो लेट्स स्टार्ट। I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you तो भाई लोगों, जगह हमने रिज़र्व कर ली है, लेकिन सभी को भूख लग गई है। नाश्ता हालांकि किया था, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि सफ़र की वजह से थोड़ा सा। ये देखो, मोहम्मद, हाउ आर यू बॉय? मोहम्मद को शर्म आ रही है, वो छुप रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यूरोपी के कंज्यूमर की ऑडियंस से मैंने नहीं मिलना अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं। ये अभी 3.5 माह के हैं। हाय मोहम्मद, कैसे है बेटा? स्माइल तो कर दो। दोस्ती हो गई ऑडियंस से? हेलो।
बड़ा प्यारा है। देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा सकूँ क्लाउड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। शायद आपको आवाज़ भी कम आ रही हो। तो रश काफ़ी कम है और मैं यही सोच के आया था कि रश थोड़ा सा कम हो। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रश में मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया था। अगर लड़के वगैरह हों अकेले तो फिर तो काफ़ी अच्छा ट्रिप हो जाता है, रश होगी। लेकिन आज ज़रा मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ, तो अभी चिल मारते हैं आज अंदर जाके, स्लाइड्स वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं। I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me like, I'm dreaming of you. I dream of a new life. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close, who could light this fire? So reach for the stars, 'cause we're aiming high. You can't wait to see me now, 'cause lately you've been feeling down. You lay awake alone at night. Oh, like your life inside a car. Forget the world and drive real far. Yusra baby, Yusra. अंकल जी भी इंजॉय करने आए हुए हैं। क्या बच्चों के साथ तो आना पड़ता है। अंकल जी हाय कर दें। हेलो। छोड़ दो मजा आ रहा है। Yusra. Put that record on again. Oh, my love, it's you and I. Close, close, who could light this fire? So reach for the stars, 'cause we're aiming high. तो भाई लोगों, अभी हम खड़े होंगे इस बकेट के नीचे, शान, अरसलान और दोनों बच्चे। तो ये बकेट है ऊपर, ये अभी भर रही है। भरने के बाद ये जो है ये यहाँ खड़े होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा इसका स्लो मोशन। I'm dreaming of you. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. तो फ्रेंड्स, अभी हम लंच ब्रेक के लिए आ गए हैं। तो 1 o'clock to 2 o'clock जो है लंच ब्रेक होता है। तो इस दौरान हम कुछ खाना वगैरह खा लेंगे, रिफ़्रेश हो जाएंगे दोबारा। उसके बाद पूल पे जाना है। पूल बहुत ज़बरदस्त है, इनका ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ की भी आपको सैर करवाएंगे। तो भाई लोग, अभी हम आ गए हैं वापस। शान और अरसलान पहले से पहुँच गए हैं, मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। तो दोबारा से चिल मारते हैं। ये देखें वो पीछे बच्चे।
अभी हम वापस जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। शान और अरसलान ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब ये जो है ना मोहम्मद के साथ प्यार की पूरी कसर निकाल रहे हैं। तो अभी जाने का है, वापसी जाने का टाइम है। क्या टाइम हो गया भाई? 5 तकरीबन 5 बज गए, 5:30 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। तो अगर आपने भी आना हो तो आप टाइम से आइएगा ताकि बंदा भरपूर इंजॉय कर सके। तो अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। आप दोस्तों ने भी इंजॉय किया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद है तो फिर प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उनको भी सजेस्ट कीजिएगा कि वो यहाँ पे आएँ। फिस्टा पार्क भी मैं गया हुआ हूँ, लेकिन उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा बेहतर पार्क है। यहाँ सफाई का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सफाई का इंतज़ाम है। हर वक्त कोई ना कोई हाउस कीपर, स्वीपर जो है सफाई में के काम में मसरूफ़ होता है। कहीं भी आपको डस्ट वगैरह नहीं नज़र आएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।